हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज वीडियो लेक्चर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। So what are ferromagnetic materials? Basically, ferromagnetic materials are those material जिनके एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस के पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। Ferromagnetic materials are those materials whose atoms, molecules और आयंस possesses permanent magnetic dipole moment। तो एक सीधी सी बात है, यू मे थिंक दैट पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास भी, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एटम के पास भी परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल? पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है उनके एटम्स का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन द मटेरियल, सो दैट एक एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल गेट कैंसल आउट विद द अनदर एटम। एक एटम का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल गेट कैंसल आउट ड्यू टू द अनदर एटम। लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कुछ और होता है। इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एक एटम जो है उनका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, तो वी विल हैव अ ग्रुप ऑफ सम एटम्स। हमारे पास एक ग्रुप होगा फ्यू एटम्स का हुज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी अलाइंग इन द सेम डायरेक्शन। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एटम्स के स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स होंगे जिनका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में है। सो दैट रीजन, in that region of ferromagnetic material we will have a permanent magnetic dipole moment, right? लेकिन ये जो ग्रुप्स है, now these groups are randomly oriented, ये स्मॉल स्मॉल जो ग्रुप्स है वो randomly oriented है, वो randomly distribute हुए हैं, and hence as a whole the material is not having permanent magnetic dipole moment. Remember, again we will repeat that paramagnetic material के एटम के पास permanent magnetic dipole moment है, लेकिन एक एटम की जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो उसके नेबरिंग एटम की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ग्रुप ऑफ एटम्स के पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, मींस एक स्मॉल ग्रुप होगा एटम्स का जिनके सारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है, एंड हेंस दैट रीजन विल हैव परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और ये जो स्मॉल रीजन है इन्हें हमने नाम दिया है डोमेन। सो इफ वी ड्रॉ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सपोज हम यहां पे अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ड्रॉ करें, रेंडमली आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल डोमेन्स, ऐसे स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में होगा। और ये जो सपोज मान लो ये डोमेन की हम बात कर रहे हैं, तो फॉर दिस डोमेन all the atoms will be arranged in such a way that this group, this area will have a net magnetic dipole moment. मान लो इसका net magnetic dipole moment is in this direction, ये direction में। In the same way यहाँ पे एक small group of atoms होगा, suppose उनका magnetic dipole moment ये direction में है। In the same way somewhere over here we will have a net magnetic dipole moment in this direction। यहाँ पे कहीं पे suppose net magnetic dipole moment will be in this direction। Here suppose it is in this direction, यहाँ पे vertical upward ले लेते हैं, somewhere over let us say it is in vertical downward direction, right? Here horizontal यहाँ पे ले लेते हैं, तो यहाँ पे suppose इस direction में है, somewhere over here it is in vertical upward direction, right? Let us say here it is in this direction, then here it is in this direction. So a group of atoms will have a permanent magnetic dipole moment। और ये जो group है, ये जो small region हमें मिल रहा है, that is known as domain। इसे हम क्या कहेंगे? डोमेन। और ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ की है, दिस इज नोन एज वॉल ऑफ डोमेन, ये सब होगा वॉल ऑफ डोमेन, ये यहां पे ये वॉल ऑफ डोमेन, राइट? सो फॉर अ स्मॉल ग्रुप, फॉर अ स्मॉल ग्रुप ऑफ एटम्स, द मॉलिक्यूल्स विल बी अलाइन इन सच अ वे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस will be aligned in such a way that that region will have a permanent magnetic dipole moment। और as you can see in this figure, ये जो small small groups है, they are randomly oriented, and hence the net magnetic dipole moment will become zero। Remember, paramagnetic material, diamagnetic material और ferromagnetic material तीनों की net magnetic dipole moment is always zero, right?
इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल एटम के पास ही परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग इन सच अ वे दैट द नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बिकम जीरो. ऑन दी अदर हैंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल के एटम के पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बट दैट परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्चुअली विल गेट कैंसल आउट ड्यू टू द नेबरिंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. राइट, एटम के पास डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एटम के पास है, but that magnetic dipole moment will be cancelled out due to its neighboring atom. On the other hand, ferromagnetic material में एक group of atoms के पास magnetic dipole moment है in the same direction, but इस तरह के group randomly arrange हुए हैं so that the net magnetic dipole moment will become zero. Now, यहाँ पे जो domain है, the size of this domain is approximately, जो size है that is approximately 1 mm. The size of this domain is approximately 1 mm and it contains nearly 10 to the power 11 atoms. एक डोमेन में approximately 10 to the power 11 जितने atoms है. Clear? So this is the size of the domain and this many number of atoms are there. Now when ferromagnetic material is kept in a uniform magnetic field, जैसे हमने पैरामैग्नेटिक में डिस्कस किया है, both are nearly same. Right? दोनों के एटम के पास परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है. Right? So when a ferromagnetic material is kept in a uniform magnetic field, then the magnetic field lines get highly concentrated inside the material. Ferromagnetic materials में magnetic line will be highly concentrated. Paramagnetic material में magnetic field lines will get concentrated inside the material. Paramagnetic material में magnetic field line अंदर concentrated हो रही थी. But in case of ferromagnetic material, this line will get highly concentrated inside the material. Right? Second point, when a ferromagnetic material is kept in a uniform magnetic field, then the induced dipole moment will be in the direction of field. Dia में opposite होता है, para और ferromagnetic में in the same direction of external field. As a result, this ferromagnetic material will always get attracted towards the strong field. अगर हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. राइट, और अगर हम इन मटेरियल को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, सपोज कि मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लेट अस से दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड इन दिस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ पे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा है. राइट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, तो यहाँ पे ये नॉर्थ होगा एंड हियर इट विल बी साउथ. So you can see that north south attraction will be there, north south attraction will be there, but यहाँ पे जो magnetic field है वो weak है in comparison with this. ये strong magnetic field है, this is weak magnetic field. If you remember हमने बात किया है कि the number of field lines in a given area gives the strength of magnetic field. तो obviously अगर हम यहाँ पे एक area select करें, suppose ये circle select करूँ और same circle में यहाँ पे draw करूँ same area वाला, तो you'll find कि यहाँ पे एक ही line है and here we will have 3 different lines. So this magnetic field is stronger than this one. So obviously यहाँ पे force of attraction will be very very strong. Remember paramagnetic material में जो force of attraction था that was weak and that's why in order to experience that force हमें जो paramagnetic material लेना है that should be very very light. In case of ferromagnetic material it will experience a strong attractive force. Right? So this force of attraction will be very very strong. So when a ferromagnetic material is kept in a uniform magnetic field, then the induced dipole moment will be in the direction of field. Right? When a ferromagnetic material is kept in a non-uniform magnetic field, then it will experience a strong attractive force towards the strong field. जहाँ पे strong field होगी, it will experience a strong attractive force. Clear? Now ये जो ferromagnetic material है, basically they are used to prepare permanent magnets as well as temporary magnets. Ferromagnetic materials जो है based on those material we can prepare ferromagnetic material की help से we can prepare or we can get permanent magnet as well as temporary magnet जिसे हम electromagnets भी बोलते हैं. ठीक है, now what are permanent magnets? Basically ये जो permanent magnet है they are made up of, they are known as hard ferromagnetic material. Hard ferromagnetic materials you can write. तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ एल्निको. यहाँ पे हम लिख रहे हैं एल्निको, बट इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन. एल मीन्स एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड Cu कॉपर. एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट
AlNiCO and Cu होना चाहिए, which is copper. But apart from that, aluminum is iron is also there. तो इनका कॉम्बिनेशन का हम एक एलॉय बनाते हैं and that material is used to prepare a permanent magnet. Clear? So this alloy is used to prepare a permanent magnet. It is known as hard ferromagnetic material. On the other hand, हमारे पास soft ferromagnetic material भी है, right? Soft ferromagnetic material का example है soft iron. They will behave like a temporary magnet, or you can say that electromagnets. Whenever current is passing through such material, or when they are kept in a uniform magnetic field, they will behave like a magnet. But as soon as these external conditions are removed, they will again get demagnetized, right? Soon they will get demagnetized, hence they are used as a temporary magnets. Now permanent magnets कहाँ पे use होते हैं, that we all know, but these temporary magnets are used in electrical bell, then electromagnetic cranes, right? जहाँ पे हम लोग heavy weight lift करते हैं, so in that case we are using electromagnets. Clear? So we can say that ferromagnetic material can be divided into two groups. One is hard ferromagnetic materials, while the other one is soft ferromagnetic materials. What are hard ferromagnetic materials? So hard ferromagnetic materials are those materials which retains their magnetic property even after removing of external magnetic field. Suppose मान लो ये हमारे पास एक ferromagnetic material है. Now if this ferromagnetic material is kept inside a solenoid, अगर हम इसे solenoid के अंदर place करें, right, that is in a uniform magnetic field, then obviously this material will get magnetized. ये material magnetized हो जाएगा. Now अगर हम इस material को solenoid में से remove करें, and if this material contains magnetic field or retains magnetic field for a longer period of time, right, इसके अंदर जो magnetic field produce हुई है, if that magnetic field remains for longer period of time, तो हम इस material को बोलेंगे hard ferromagnetic material. So what are hard ferromagnetic materials? On removal of external magnetic field, if the ferromagnetic material retains magnetic field for a longer period of time, then such materials are known as hard ferromagnetic material. So this will be your definition. If a ferromagnetic material retains magnetic field for a longer period of time after removal of external magnetic field, then such ferromagnetic materials are known as hard ferromagnetic materials, right? So hard ferromagnetic materials are those material on removal of external magnetic field retains magnetic field for a longer period of time. What are its example? So examples of ferromagnetic material, hard ferromagnetic materials are alnico. That is basically a combination of iron, aluminum, nickel, cobalt and copper, right? Here we are writing alnico only, but it is a combination of iron, aluminum, nickel, cobalt and copper. This alloy will act as a hard ferromagnetic material. Generally, for hard ferromagnetic material or for ferromagnetic material, magnetic susceptibility is greater than 1000, right? On the other hand, we have soft ferromagnetic materials. So what are soft ferromagnetic materials? If a ferromagnetic material, when removed from external magnetic field, loses its magnetic properties, as soon as the material is removed out of the magnetic field, it will demagnetize.
then such materials are known as soft ferromagnetic material. So what are soft ferromagnetic materials? On removal of external magnetic field, if the material gets demagnetized, quickly get demagnetized, then such materials are known as soft ferromagnetic materials. Examples, soft iron, you can say, right? Soft iron is an example for soft ferromagnetic material. Now, hard ferromagnetic materials are basically used to make permanent magnets. So uses for hard ferromagnetic material is to create or to prepare permanent magnet. Soft ferromagnetic materials are basically used to create or to get temporary magnets which are known as electromagnets. Basically जो soft ferromagnetic material है, from that we are preparing electromagnet, क्योंकि we want magnetic properties of such material, we want magnetic property for a specific time interval only, right? So in that case we will use electromagnet. हमें ये नहीं चाहिए कि we should get a uniform magnetic field throughout. अगर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थ्रू आउट, देन वी विल यूज परमानेंट मैग्नेट. बट देर आर मेनी एप्लीकेशंस जिसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है फॉर टाइम बीन विल नॉट रिक्वायर मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर सम इंस्टेंट वी वांट अ मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दैट केस वी विल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट. से फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बेल, right? In electric bell, when you press the button, current will flow, right? So because of that current, a magnetic field will be produced and we'll get electromagnets. Same thing is that in cranes, magnetic cranes, in order to lift a iron container, we can use magnetic cranes, right? Magnetic crane का जो arm होगा, that arm is taken over, और वो arm को हम एक iron container के ऊपर रख देंगे. Then we'll press the button so that it will act like an electromagnet. So वो iron container will get stick to it, वो इसके साथ stick हो जाएगा. Then you will remove or if you lift that, then the container will be lifted. और आपको जहाँ पे रखना है there position you will move and there you will keep. और जैसे ही वहाँ पे हमने रख दिया है, we'll again press the button to demagnetize it, right? So as soon as you will off the circuit, the arm of that crane will get demagnetized. और हमें जहाँ पे वो बॉक्स रखना है, आयरन बॉक्स, वो वहाँ पे प्लेस होने के बाद इफ यू लिफ्ट, ओनली आर्म विल बी लिफ्टेड, राइट? सो वहाँ पे हमें टेम्पररी मैग्नेट की जरूरत है. तो इन दैट केस वी विल यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. So this is the difference between soft ferromagnetic material and hard ferromagnetic material. Soft ferromagnetic material मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, you have to write yourself. क्या है soft ferromagnetic material? If a ferromagnetic material quickly loses its magnetic properties, that is, it get quickly demagnetized, right? Then such after removal of external magnetic field, then such materials are known as soft ferromagnetic material. Soft iron is an example for soft ferromagnetic materials, and they are used for electromagnets, that is temporary magnets. Now अगर हम ferromagnetic material का temperature increase कर रहे हैं, if you keep on increasing the temperature of the ferromagnetic material, तो जो tiny magnetic dipoles जो अंदर create हो रहे हैं in a small domain, they will get random, वो rearrange करेंगे अपने आप को in random direction, and because of that जो magnetic property है ferromagnetic material की वो decrease होती जाएगी, right? And at a particular temperature all the domains will break up. कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सब डोमेन ब्रेकअप हो जाएंगे, राइट? दे विल गेट डिवाइडेड, और जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है दे विल अरेंज देमसेल्फ इन रैंडम डायरेक्शन. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगा? एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो ये डोमेन्स है वो डोमेन्स डिसअपियर हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अंदर जो हमने बात की थी एटम्स के पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है विल बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. एक ग्रुप होगा एटम्स का जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और उसकी वजह से वो डोमेन क्रिएट हुआ है. बट जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सो बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर जो डोमेन के अंदर जो एटम्स है दे विल गेट थर्मल एनर्जी, और वो सब एटम्स दे विल ट्राई टू अरेंज और दे विल इनफैक्ट अरेंज देमसेल्फ इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में एक दूसरे को अरेंज करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दैट द मटेरियल विल बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन नहीं होते, बट ऑल द एटॉमिक डाइपोल्स आर अरेंज इन अ रैंडम डायरेक्शन. सो सेम थिंग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी होगा. जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे डोमेन विल डिसअपियर, एंड जो टाइनी एटॉमिक डाइपोल्स है दे विल अरेंज देमसेल्फ इन अ रैंडम डायरेक्शन, which is the case of paramagnetic materials, right? So if you increase the temperature of ferromagnetic material, then slowly the domains will disappear and the atoms will arrange themselves in such a way that the net magnetic dipole moment will become zero, which is similar to paramagnetic material.
तो हम बोल सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बी कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल. So the temperature at which ferromagnetic material get converted into paramagnetic material is known as Curie's temperature. The temperature at which ferromagnetic material get converted into paramagnetic material is known as Curie's temperature, right? And the magnetic susceptibility at that temperature is given as C over T minus Tc, where C is Curie's constant. यहाँ पे T जो है it is greater than Tc, means temperature should be greater than Curie's temperature. So this will be the formula for magnetic susceptibility. Clear? An important observation for ferromagnetic material is that अगर हम ferromagnetic material को uniform magnetic field में place करें and if we plot a graph of magnetic field versus IF, that is magnetic intensity, then we will get an important result, right? So that we are going to discuss, but before that, pause this video and copy this fast. Now we are going to discuss about the behavior of a ferromagnetic material when kept in a uniform magnetic field. Suppose for that, मान लो हमारे पास एक solenoid है, let us say this is that solenoid, and these are the number of turns over it. The number of turns की हमने बात की थी, that are this, right? And number of turns से मान लो, right? Through this one of this term, current is entering inside, जिसे हम IF बोलते थे, right? And into number of turns, so this will be NIF. You can say from this IF you can find H, क्योंकि H की फॉर्मूला है NIF, which is equal to IF, right? तो यहाँ से हमें H मिल जाएगा. Current is entering inside like this, right? और यहाँ से current बाहर आ जाएगा. So in order to measure IF, you can connect here an ammeter. Depending on the range, you can connect a milliammeter or an ammeter, right? यहाँ से current बाहर आ रहा है. In order to measure the magnetic field, we'll keep a device over here, जिसे हम बोलते हैं magnetometer. Magnetometer is a device which is used to measure the intensity of magnetic field, right? So यहाँ पे कहीं पे हम एक magnetometer रखेंगे, which will be able to measure the magnetic field, right? Now suppose if we plot a graph of IF, that is H versus magnetic field, then that graph what we will get is not a linear graph. You can say that जो graph हमें मिलेगा that is non-linear graph. Also जो material का behavior है that will depend on the history of the material, whether ferromagnetic material पहले से ही magnetized था कि नहीं था, right? It will totally depend on the history of the material. So suppose जो ferromagnetic material हमें study करना है, that material is introduced inside this solenoid, उसे हम इस solenoid के अंदर place कर देते हैं. जिस ferromagnetic material की हमें property study करनी है, that material is kept inside this solenoid. मान लो initially जब हम material place कर रहे हैं, at that time the material is not magnetized, इसके पास magnetic property नहीं है, right? So if we plot a graph of B versus H, magnetic field B versus magnetic intensity H, जिसे आप IF भी लिख सकते हो, right? Then initially when current is 0, material is not magnetized, so graph will be at 0 0, right? Now slowly we will increase the current, right? This IF we are going to increase. ये IF की value जो है that we are going to increase from 0 to let us say 1 2 3 4 and so on. So as you keep on increasing the current, initially जो material है that will not respond that much. जो मटेरियल हमने अंदर रखा है that will not respond to the external current, क्योंकि जो करंट सोलेनॉइड में फ्लो हो रहा है that current is not enough to produce a strong magnetic field, so that जो भी डाइपोल्स है they can arrange themselves in the direction of magnetic field. It will take टाइम लगेगा हर एक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज करने के लिए. So initially it will take more time and then slowly all the dipoles will try to arrange themselves in the direction of external magnetic field. And finally जब हर एक डाइपोल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, then that situation is known as saturation. Then we'll receive saturation. So यहाँ पे initially if you increase current, तो magnetic field will not increase that much. Then slowly magnetic field will increase and at point A you will get saturation magnetization. अब A point से अगर आप ज़्यादा करंट इंक्रीज कर रहे हो, if you are increasing current beyond A,
then it will not affect the magnetic field, right? Magnetic field will not increase, so no point on increasing the current beyond this limit. So यहाँ पे O से हमने ग्राफ स्टार्ट किया. The graph which we are getting is like this. Initially magnetic field इतनी नहीं increase हो रही है जितना हम current increase कर रहे हैं. Then slowly magnetic field will start increasing. In this condition, जो dipoles है they will start arranging themselves in the direction of external magnetic field. Domains break होके they are trying to combine into a unit domain, right? ये सब डोमेन कंबाइन होकर एक सिंगल डोमेन फॉर्म होंगे. एंड एट दिस पॉइंट ए ऑल दी डाइपोल्स आर अरेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो इसके बाद हम किसी और को अरेंज कर ही नहीं पा रहे, जितने थे सब अरेंज हो गए, राइट? सो दिस सिचुएशन इज नोन एज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, राइट? तो इफ यू इंक्रीज करंट बियॉन्ड दिस देयर इज नो पॉइंट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगी. वी हैव ऑलरेडी रीच द सैचुरेशन लेवल. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिक्रीज करंट. मान लो हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 करके 10 एम्पियर तक करंट इंक्रीज किया, 10 मिली एम्पियर ले लो, राइट? सो वी गॉट सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. नाउ वी आर डिक्रीजिंग द करंट फ्रॉम 10 to 9 8 7 6. सो जैसे ही हम करंट डिक्रीज करेंगे यू विल गेट अ कर्व लाइक दिस. इट मीन्स दैट एट पॉइंट बी, इस पॉइंट को हम बी कंसिडर करते हैं, तो एट पॉइंट बी करंट विल बिकम जीरो. यू कैन सी दैट ये जो करंट की एक्सिस है दैट इज जीरो. सो करंट जीरो है बट मटेरियल इज स्टिल रिटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड. करंट इस पॉइंट पर जीरो है बट मटेरियल इज नॉट डीमैग्नेटाइज. मीन्स अगर आप करंट इंक्रीज कर रहे हो तो मटेरियल विल गेट मैग्नेटाइज. एंड इफ यू मेक करंट जीरो मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं होगा, इट विल रिटेन सम मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इट, राइट? सो ये पॉइंट बी पे इट विल हैव सम मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉन जीरो एंड दिस पॉइंट इज नोन एज रिटेंटिविटी. पॉइंट बी, इस कर्व पे जो पॉइंट बी है दैट पॉइंट इज नोन एज रिटेंटिविटी, राइट? सो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हुई नहीं, करंट हमने जीरो कर दिया फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हुई. तो व्हाट वी कैन डू नाउ इज, सपोज हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर ले. मींस वी आर अलाउइंग करंट टू फ्लो इन नेगेटिव डायरेक्शन. करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, बट इट मीन्स दैट इफ यू आर टेकिंग नेगेटिव करंट मीन्स यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अलाउइंग करंट टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, अब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं. मीन्स करंट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड एंड इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द अदर साइड, right? So in that case for negative current you will get graph like this. So at some point C magnetic field will become zero, right? So the value of OC, this value will be known as coercivity, right? The current required to demagnetize the material, current which is flowing in opposite direction which is required to demagnetize the material, right? यहाँ पे suppose value let us say is IF, then it means that IF जितना करंट मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना होगा so that the material will get demagnetized, right? तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे coercivity. Coercivity and it is retentivity. Point B जो है वो retentivity है and point C is coercivity. Now if you further keep on increasing the current in reverse direction you will get point D, right? So at point D the material will get again magnetized. थोड़ा proper draw कर लेते हैं, right? So at point D again you will get saturation magnetization. Point D पे हमें वापस saturation magnetization मिलेगा, but it is not necessary कि जो डायपोल्स है वो पहले जैसे अरेंज थे वैसे ही अरेंज हो गए. सपोज इनिशियली एट पॉइंट ए जो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, राइट, वहां पे सब डायपोल आर अरेंज इन दिस डायरेक्शन. सो एट पॉइंट डी इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक डायपोल इस डायरेक्शन में अरेंज होगा. मे बी ऑल विल अरेंज इन दिस डायरेक्शन एक्जैक्टली ऑपोजिट, राइट? सो हियर ऑल्सो विल गेट सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, राइट? ए पॉइंट भी सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन है, डी पॉइंट इज ऑल्सो अ सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, बट नाउ जो डायपोल अलाइन होंगे वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे. सो अगेन विल डिक्रीज द करंट टू जीरो, तो हमें वापस वही कर्व मिलेगा एंड अगेन विल गेट टू पॉइंट ए. मीन्स विल नेवर बी एबल टू गो टू पॉइंट जीरो इन दिस कंडीशन, राइट? सो दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. अगर आप कॉलेज में जाओगे और फिजिक्स यू आर टेकिंग देन यू विल हैव एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू दिस. आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है. सपोज यू आर टेकिंग वैल्यू 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, इंस्टेड ऑफ 3 अगर आपका 3.5 हो गया है देन यू शुड नॉट डिक्रीज इट टू 3 एंड टेक रीडिंग, बिकॉज 3.5 से आप डिक्रीज करोगे देन यू विल नॉट गेट द सेम कर्व. अगर यहाँ से आप ऐसे जा रहे हो, राइट, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द करंट देन यू विल नॉट बी एबल टू रीच द सेम पॉइंट.
यू कैन सी दैट हमने ओ से स्टार्ट किया था एंड थ्रू द एंटायर प्रोसेस वी विल नॉट बी एबल टू रीच पॉइंट ओ एट एनी केस एट एनी पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, और ये जो शेप हमें मिल रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हाइस्टेरिसिस, राइट। इसको हम बोलते हैं हाइस्टेरिसिस। सो यहाँ पे दो तीन चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। दिस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे पॉइंट बी जो है दैट इज रिटेंटिविटी। मीन्स क्या, इस रिटेंटिविटी का मतलब है अगर आप करंट जीरो भी कर रहे हो देन द मटेरियल इज रिटेनिंग मैग्नेटिक फील्ड, राइट। आप अगर इफ यू वांट टू मेक जीरो मैग्नेटिक फील्ड देन यू हैव टू डिक्रीज द करंट। सो जैसे जैसे आप करंट डिक्रीज करोगे मैग्नेटिक फील्ड विल डिक्रीज, राइट, बट इट विल नॉट बिकम जीरो। बट इफ यू वांट जीरो मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको जीरो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए देन यू हैव टू अलाउ द करंट टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो हम करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवा रहे हैं, देन मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम जीरो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी वो पॉइंट हम बोलेंगे कोएर्सिविटी, राइट। द वैल्यू कोएर्सिविटी मीन्स करंट ही है, द वैल्यू ऑफ करंट विच इज रिक्वायर्ड टू डीमैग्नेटाइज द मटेरियल, राइट। फिर अगेन इफ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन तो डी पॉइंट पे अगेन हमें सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मिलेगा, बट इस टाइम जो अरेंजमेंट होगा दैट विल बी टोटली डिफरेंट देन द अरेंजमेंट एट पॉइंट ए। फिर आप अगेन करंट इंक्रीज करो एंड यू करंट चेंज द डायरेक्शन। यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन वापस चेंज करेंगे देन विल रीच पॉइंट ए, बट इन एनी केस वी विल नॉट बी एबल टू रीच टू पॉइंट ओ, राइट। तो ये जो शेप हमें मिला है दैट इज नोन एज हाइस्टेरिसिस, राइट। So this is about ferromagnetic material. If it is asked that write note on ferromagnetic material, तो आप क्यूरी टेम्परेचर वाला जो इससे पहले हमने किया था वहाँ तक ही लिखना है। बट इफ इट इज asked that write note on hysteresis for a ferromagnetic material, तो आपको ये पूरा ड्रॉ करके लिखना है और इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है। वॉट एवर आई हैव सेड ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट। जितना भी मैंने आपको यहाँ पे इस लेक्चर में बताया है ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट, राइट। दैट इनिशियली मटेरियल इज नॉट मैग्नेटाइज, देन जैसे जैसे हम करंट इंक्रीज करेंगे मटेरियल विल रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड स्लोली एंड विल गेट कर्व O to A विच इज नॉन लीनियर कर्व, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि डायरेक्टली आप करंट इंक्रीज करो और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। एट पॉइंट ए आपको सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन मिलेगा। नाउ फर्दर इंक्रीजिंग करंट इज ऑफ नो पॉइंट बिकॉज यूज ही नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन अचीव हो गया है। तो हमने करंट डिक्रीज किया, जैसे ही हमने करंट जीरो कर दिया विल फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल प्रेजेंट इनसाइड द मटेरियल एट पॉइंट बी, तो उस पॉइंट को हमने रिटेंटिविटी बोल दिया। अब बी पॉइंट से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड जीरो करनी है तो हमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करवाना होगा। सो वी आर अलाउइंग करंट टू फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वी गॉट पॉइंट सी। पॉइंट सी इज अ पॉइंट वेयर magnetic field is zero but current is not zero, means the amount of current required to demagnetize the material, that is coercivity. फिर अगेन आप करंट को इंक्रीज कर रहे हो ऑपोजिट डायरेक्शन में तो यू विल गेट डी पॉइंट विच इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, जो फर्स्ट पॉइंट ए से टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। देन अगेन इफ यू इंक्रीज द करंट टू जीरो अगेन यू विल गेट हियर रिटेंटिविटी, देन अगेन कोएर्सिविटी एंड बैक टू पॉइंट ए। इन एनी केस हम ओ पॉइंट पे वापस नहीं जा सकते हैं, दैट्स वाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर? सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नाउ आई थिंक ओनली परमानेंट मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, राइट, एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट टॉपिक इज लेफ्ट विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। और आई थिंक 4-5 सम भी बाकी है वो हम कंप्लीट करेंगे इन नेक्स्ट 2 or 3 वीडियो लेक्चर। उसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे ऑफ दिस चैप्टर विच आर ऑलरेडी आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जाम, JEE हो, गुड सेट हो या फिर नीट की एग्जाम हो जिसमें इस चैप्टर के MCQ पूछे गए हैं, दैट MCQ वी आर गोइंग टू सॉल्व। Clear? So till then, keep on reading, keep on writing and keep on preparing. Thank you.